testament to his creator. Thank you so much. Shukriya, Syeda. It's a moment for some of us because I grew up listening to my father talk about Maulana Azad, quoting him all the time, talking about his great work, his valuable words. और एक बार before he wrote the book on Maulana Azad, he said, मुझे डर है कि मैं ख्वाब भी अंग्रेजी में देखना शुरू कर रहा हूँ. And then he said, मुझे उर्दू में किताब लिखनी है और मैं ये मौलाना आज़ाद पे लिखूंगा. And that's when he wrote the book. And yeah, and he sat in, and Kashmir University invited him. This was 1989, the year where soon after trouble began. They invited him in the summer and they said, आप यहाँ बैठ के लिखिए. And Baba said, मैं चिनार के झाड़ के नीचे बैठ के लिखूंगा. And he actually, that was his first draft. So this was just something that I remembered while you were speaking about Maulana Azad. Thank you. I mean, Appa was constantly worried, why are people interested in Maulana Azad today? Why are you asking me to speak on Maulana Azad? So you can see the interest and the investment that we still have, and that is the hope. उस उम्मीद के सहारे हम लोग हर रोज काटते हैं. दो ऐसे projects हैं जो Dr. Hameed has undertaken over the years, which have impressed me greatly at a personal level, and I really want to hear about that from her, and I think it will interest a lot of us here. In the year 2000, you wrote a report after extensive traveling and research called Voice of the Voiceless, Status of Muslim Women in India. Then you published another work called My Voice Shall Be Heard, Muslim Women in India. You went on to form the NGO Muslim Women's Forum. You have been instrumental in building bridges, creating platforms for dialogue, and most importantly, destroying stereotypes. बताइए इसके बारे में, हमें we really want to know a little more about this. जब मैं National Commission of Women की member थी, there was a wonderful woman by the name of Mohini Giri. She was my mentor and she was my chairman. तो उस वक्त हमने ये Voice of the Voiceless, Status of Muslim Women in India, हमने उस वक्त. Now I don't want to talk about 20 साल हमने क्या किया या ना. This is 2024, so we'll be 25 साल हो गए. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने what we have done now is, Anusha, we have created a 16-part, I don't know what to call it. It's not a serial. It's about 16 short episodes on understanding Islam. और उसमें very nicely, जब हमने उसमें women in Islam, life of the Prophet, history of Islam, the incident of Karbala, pillars of Islam, we have incidents किए हमने उसमें. नसीरुद्दीन शाह सेट कि हम इसको एंकर करेंगे, तो एंकर किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया. तो छोटा छोटा वो बहुत एंकर करते हैं, बट द होल आइडिया वाज, फॉर एग्जांपल विमेन इन इस्लाम का हमने 2 पार्ट्स किए. बेसिकली हमने ये दिखाया अपने एग्जाम्पल से बात करके. हाँ, उसमें तसव्वुफ के भी, सूफीज़म के भी दो हिस्से हैं या 2 या 3 हिस्से हैं, एंड दे आर रेंज बिटवीन 6 minutes and maybe the longest is about 19 minutes. तो और उसमें ये भी है eclectic Islam, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम मुहर्रम की बात करते हैं तो कर्नाटक में कतला रात्रि होती है. यू कांट मेक आउट कि ये अलम है या कोई हिंदू किस किस्म के हिंदू एंटिटीज हैं. मतलब द होल ब्यूटी ऑफ इस्लाम इज इट्स एक्लेक्टिकनेस. वो भी हमने दिखाई, दिस गंगा जमनी तहजीब. तो उसमें हमने ये दिखा, जो हमने फॉर एग्जांपल विमेन इन इस्लाम, बस वो एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि इतना बड़ा स्टेटस है इस्लाम में, कुरान पाक में औरतों का कितना बड़ा स्टेटस है.
यानी इतना बड़ा स्टेटस उनका है कि एट दैट टाइम जब व्हेन द चाइल्ड वाज बेरीड एट बर्थ, उस वक्त इस्लाम गेव प्रॉपर्टी राइट्स टू women. उस वक्त इस्लाम, देवर 30, 40, 50 शादियां करते थे लोग, प्री इस्लामिक. इस्लाम इमीडिएटली 4. एंड फिर कुरान की एक लाइन है जो मैंने इतनी बार कोट की है, बट नोबडी रियली, आई डोंट थिंक एनीवन इवन रीड्स इट. It says you cannot treat four entities in the same, with the same love and the same consideration and compassion, so you better stay with one. I'm saying it in my own rough manner, but कुरान पाक का ये लफ्ज़ है. तो हमने ये सारी औरतों का जो स्टेटस है, हमने फातिमा मिर्निसी को यूज़ किया, हमने लाले बख्तियार को यूज़ किया, हमने all the women scholars who have written on women in Islam, और फिर हमने हज़रत फातिमा को, हज़रत ज़ैनब को, the entities of हज़रत, मतलब the whole entities of Islam, the status of women in Islam. Then we did, हमने 3 episodes उसमें किए तसव्वुफ के. So what I'm trying to say is that this 16 part, whatever we have done, it is called Understanding Islam. हमने अभी किसी YouTube वगैरह कहीं भी नहीं डाला. हम सोच रहे हैं कि उसको कैसे हम किस तरह से propagate करें. मैंने तो निकाह भी पढ़ाए हैं, 17 निकाह मैंने पढ़ाए हैं, और पहला निकाह मैंने लखनऊ में पढ़ाया, जहाँ there were fewer guests and there was more media. This was many years ago. मगर उस वक्त बहुत फिरंगी महल से मुझे बहुत एक चेतावनी भी आई, but slowly they got used to it. And then the last, जो आखिरी निकाह मैंने पढ़ाया था, it went viral on the media because it was Dr. Zakir Hussein's great grandson Gibran, who, so unka मैंने. So anyway, what I want to say is that we have broken a lot of these wrong notions for which we are responsible. Of course, हमारा जिम्मेदारी हमारी है, हमने क्यों उसको गलत, but we have tried to break them, and I think that is my whole objective is to, and ये मौलाना आज़ाद का भी था, खैर मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, मगर यही ऑब्जेक्टिव है कि इस्लाम को अपने सही फॉर्म में, उसके सही मतलब में, उसके सही मफहूम में उसको पेश किया जाए. There are questions on this. We can take them a little later. Just one last point. Again, I don't know how many of you know that there is another passion project of Abbas. In 2013, inspired by the life and works of Khwaja Ahmad Abbas, you formed a memorial trust in his name. I know that among all the other passion projects of yours, this has a special place, and we have already sort of touched upon cinema and stuff, so I want you to tell us what is your sort of draw towards the moving picture, and what is it that... I'm very interested in I know. films. Very interested in films. So it's great to have a film lover always. For some of us, it's very important. They need to buy tickets as well, right? And Khwaja Ahmad Abbas Memorial Trust के बारे में बताइए, because what made you pick him up to be, because I know the voice that he was, but many young people don't know about him, and it'd be lovely to find out more and then maybe direct them towards the website and all the work that he's done. मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ. I think lots of people don't know. हमारा जो descent है वो, I don't want to go into the whole descent and all, but the importance of I should have said it in the last intervention. Maulana Hali was my great grandfather. तो मौलाना हाली ने एक बहुत उन्होंने बड़े शायर थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने बहुत मशहूर एक मुसद्दस हाली लिखी. मुसद्दस is just a verse form. It was called मद्दो जज़र इस्लाम, The Rise and Fall of Islam. It's a long poem, and खुशवंत सिंह ने मुझसे कहा कि इसका ट्रांसलेशन करो. मैंने कहा हो, मैं कैसे करूँगी. कहने लगे मैं जवाब शिकवा कर सकता हूँ, तो तुम इसका नहीं कर सकती. तो मैंने कहा फो, and he said, now you rhyme it. I said, rhyme it in English? How can I do that? He said, if I can do shikwa, jawab shikwa, you can do this. So anyway,
फिर मैंने उसको राइम किया, फिर एनीवे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो हाली साहब ने ये लिखा है कि तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो खैर। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक से आजाद। इत्तेफाक मीन्स कोऑपरेशन। इत्तेफाक डजंट मीन कोइंसिडेंस। इत्तेफाक का मतलब बताइए, असली मतलब क्या है? इत्तेफाक मीन्स एक फेलो फीलिंग। आप बताइए, आप तो स्कॉलर हैं। मुल्क है इत्तेफाक से आजाद, मुल्क है इत्तेफाक से आबाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, खाते खैरों की ठोकरें क्यों कर। मुल्क जब इत्तेफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। So that I inherited that, and of course, I mean, I was so ignorant, I didn't know a lot of these things, but I had mentors like Khaja Ahmad Abbas, like Khushwant Singh, like few mentors I had. So then जब मैंने ये genealogy को trace किया, तो फिर ख्वाजा अहमद अब्बास, फिल्म वर्ल्ड, ही वाज अ, कभी उन्होंने सक्सेसफुल तो कभी नहीं हुए। हमेशा वो अपने छोटे से फ्लैट में, फिलोमिना लॉज, अब तो उसका नाम ख्वाजा अहमद अब्बास रोड हो गया है, बट छोटे से यूहू के फ्लैट में रहते थे, गुर्बत के दिन गुजारते थे, बट ही वाज एन आइडियलिस्ट। उन्होंने अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस किया साथ हिंदुस्तानी में, उन्होंने स्मिता पाटिल को और मिठुन चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस किया द नक्सलाइट्स में। आपको तो अच्छी तरह याद है वो नक्सलाइट्स। अच्छा, उन्होंने शबाना आजमी को इंट्रोड्यूस किया। पिक्चर बना सकते थे जिसका नाम नक्सलाइट्स है। हाँ, आज नहीं बन सकती ऐसी कोई पिक्चर इस टाइटल के साथ। वही तो मैं कह रही हूँ कि आज की the title itself is been the first एंड problem. Sorry to ना ना, दैट इज वेरी ट्रू। अब सवाल ही नहीं पैदा होता। और उन्होंने शबाना आजमी को इंट्रोड्यूस किया फासला में, बट और उन्होंने पहली इंडो सोवियत फिल्म बनाई विच वाज कॉल्ड परदेसी। उसमें पहला सोवियत जो आए थे ना, वो क्या कहते हैं, वो शिप, पहली शिप आई थी, और उसमें वो अफनासी निकेतन आया था हिंदुस्तान, और वहाँ he fell in love with a girl who never really reciprocated anything. नरगिस बनी थी वो। तो वो उनकी एक फिल्म थी, पार्टली शॉट, इट वाज इंडो सोवियत प्रोडक्शन, और उसमें बलराज साहनी थे एज अ ट्रूबेडोर। तो वो ट्रूबेडोर थे, और वो क्या गाना गाते थे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। तो ये उनकी ये उनका वो था। और उन्होंने तो हमें लगा कि उनके जो ही वाज उन्होंने लास्ट पेज के 40 साल तक लिखा ब्लिट्स में, एक कॉलम लिखा, उसका नाम था लास्ट पेज, और उसमें एक पिन अप की भी तस्वीर होती थी। तो लोग कहते हैं कि वो पीपल यूज्ड टू स्टार्ट रीडिंग ब्लिट्स फ्रॉम द लास्ट पेज। पिन अप की तस्वीर। My father always said that. ये ब्लिट्स वाले बड़े थे को क्या स्ट्रेटजी लग रही है। तो बस हमने सोचा कि अब्बास साहब को अभी रिसेंटली बम्बई से एक ग्रुप है, इट इज कॉल्ड जश्न कलम, बम्बई से एक ग्रुप है, उन्होंने दे जस्ट फेल इन लव विद अब्बास साहब। तो उन्होंने अब्बास साहब की एक कहानी जिसका नाम है सरदार जी, जिसके लिए उनको पाकिस्तान में भी वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया गया, हिंदुस्तान में भी वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया गया। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। और जब वो और ही वाज अ लिटिल वरीड अबाउट इट, केस चला, सब कुछ हुआ। तो फिर एक बार वो वहाँ गए कहीं कश्मीर के, इन वन ऑफ द नेहरू ने उनको भेजा। बाय द वे उनकी ऑटोबायोग्राफी है आई एम नॉट एन आइलैंड, और उसमें उन्होंने 3 चैप्टर्स लिखे, एंड द my love affair with Nehru 1, my love affair with Nehru 2, my love affair with Nehru 3. He's a very, very readable bio. So what he went into this, कहीं वो करगिल या कहाँ जहाँ भी वो गए, तो वहाँ उनको सरदारों का एक रेजिमेंट था। तो वहाँ उनको पंडित जी ने भेजा, शेख अब्दुल्ला ने कहा तुम जाके देखो, एंड ही वाज अ रिपोर्टर, सो ही वेंट देयर। तो सरदारों का था वो।
तो उन्होंने कहा तुम वही अब्बास हो जिसने सरदार जी लिखी? तो ही वॉज वेरी, बहुत डर, उनको बेहद डर लगा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं वही, तुम यहाँ, यू डेयर कम हियर। तो उन्होंने कहा कि आप, एक मुझे गुजारिश है, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। Then they said, अच्छा हम तुम्हारी कहानी सुन। So all the whole regiment sat down और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। और आखिर में when he finished reading the story, they declared him an honorary सरदार। एंड उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे साथ रम पियो। अब उन्होंने कभी रम चक, एनीवे ही सेड ही गल्प्ड इट डाउन एनीवे बिकॉज ही वाज अफ्रेड। मतलब यही उनका उनका सेवा था। एंड वी वांटेड टू ब्रिंग दिस, यू नो, these aspects. And so people are, there is another person from Bangalore, he is very interested. हाँ, एक उनकी एक फिल्म है, उसका नाम है दरोगा, और उनकी एक कहानी है दरोगा और लड़की। उसको एक बड़ा प्यारा, उसको छोटा सा 21 मिनट का फिल्म, एक बेंगलोर के हैं, उन्होंने उसको जबान करके बनाया। और वो लड़की कौन है और वो दरोगा कौन है? वो लड़की है उर्दू, वो लड़की है उर्दू। और इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी कि जब दरोगा कहता है भाई तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? तो वो कह रही है मैं जाऊंगी, मैं बॉर्डर्स पे चली जाऊंगी, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो दूर से कहती है उर्दू, उर्दू, उर्दू। इट्स अ वेरी मूविंग स्टोरी एंड अ वेरी मूविंग फिल्म। तो हमें लगता है कि अब्बास साहब रेलेवेंट हो जाएंगे, लोग याद याद कर रहे हैं अब्बास साहब को। देयर इज अनदर पर्सन फ्रॉम बैंगलोर, हिज नेम इज केसरी हराबू। वो चाहते हैं कि अब्बास साहब की जिंदगी पे फिल्म बनाएं। तो अब देखते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, वो तो खैर राज कपूर की थी, पर कहानी उनकी थी, कहानी उनकी थी। और राज कपूर के लिए उन्होंने सारी हिट्स लिखी, और उनकी बेस्ट, उनको सबसे अच्छी राज कपूर की फिल्म लगी आवारा। ही ऑल्सो लाइक, सारी कहानियां उनकी थी। जब उन्होंने अब्बास साहब ने राज कपूर के लिए आवारा लिखी, श्री 420 लिखी, बॉबी लिखी, और एवरी फिल्म वाज अ हिट। तो अब्बास साहब, बॉबी तक अब्बास साहब बहुत डिसअपॉइंट हो चुके थे राज कपूर से, तो ही थोड़ा बहुत विड्रॉ किया उन्होंने। बट और आखिर में, बिल्कुल आखिर में उन्होंने एक कहानी लिखी, उसका नाम हैना था। और हैना, उसमें ज़ेबा बख्तियार थी शायद उसमें। तो हैना उन्होंने लिखी, और राज कपूर ने कहा भाई मैंने बहुत सफ़र किया है, मैंने लॉसेस वगैरह बहुत हुए हैं जिस देश में गंगा बहती है और समथिंग। तो अब्बास साहब एक मेहंदी की टोकरी में उसके लिए हैना की स्क्रिप्ट लेके आए थे। That was the last. And neither Abbas Saab was living when Henna was released, nor was Raj Kapoor living. So that's the story. It was, I think, an Indo-Pak love story. Indo-Pak and love story. one of the early ones. And, you know, with all the Raj Kapoor flourish, but the soul was beautiful. No, we won't talk about the hero. But for all of you who are interested, like I am, in Khwaja Ahmad Abbas and his work, there are some wonderful books that have been put together by Dr. Hameed. They are available on Amazon miraculously, and they make my favorite gifts also to give to people. So yeah, so that's a great service actually, to bring him back in a certain sense to mainstream discourse, because he was an idealist and he lived his life like that. So that's quite saying something. कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहता है? A brief comment would be nice as well. मैंने तो जो मेरा तो अपने निकाहनामा में है, वो मेरा, I told you my husband was a Hyderabadi and we got married, my God, ages ago in age 67. तो उसमें तो है, उसमें कोई मसला ही नहीं था। और बाद में जो जितने, उसमें भी कोई ऐसा नहीं, किसी मौलाना ने बिल्कुल तब 67 में माए निकाहनामा में ना तो कोई शरायत थी ना कुछ था, बस एक ब्लैंक निकाहनामा था और काजी इदरीस का उसमें सिग्नेचर थी, बस दैट वाज इट। और मेहर था एंड 2-3 गवाह थे, दैट वाज इट। मगर उसके बाद जितने जो मैंने 17 निकाह पढ़ाए हैं, उसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं। one word before I forget. एक तो मैं ये कहना चाह रही थी, आपने कल्पना जो कहा,
सूरह फातिहा की तालीमी रूह एग्जैक्टली जब मैंने लिख के भी लाई थी, देयर इज नो टाइम, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड एक सफ़ा है, एंड दिस इज ट्रांसलेशन by me, but original is by मौलाना आजाद. That is exactly what you said. और किसी ने कुछ और कहा था, काहे के बारे में, हाँ निकाह नामा हो गया. आपने जो कहा, एंड आई वांट टू स्पेशली रिफर टू कबीर, आबिद रजा बेदार साहब ने लिखा है. आबिद रजा बेदार इज अ वेरी वेरी वेल नोन उर्दू स्कॉलर, इन वो अब पहले वो रामपुर से हैं, बट ही इज नाउ इन अलीगढ़ एंड ही इज इन हिज वेरी लेट 90s. उन्होंने लिखा है कि मौलाना आज़ाद एक ईरानी शहजादे की तरह लगते थे. Now, when you talk about films, he was so handsome. और ऐसा कैरिकेचर उसका बनाया है कांग्रेस वालों ने. आई एम सॉरी टू से, मैंने कई बार एज ए प्लानिंग कमीशन आई हैव सेड कि व्हाट आर यू कैरिकेचरिंग हिम फॉर. And so I'm saying that aesthetics are also there. And आपने जो बात कही वो बहुत बहुत ही अच्छी, बहुत मौजू बात है. So I think really these words need to get out. और मैं कहती हूँ कि film media is the medium, is the best medium. और किसी तरह से people's imagination should be gripped by it. So till I'm alive, I can become a resource person. After me, I don't know who will. I don't know. Maybe there are other scholars or somewhere else. But yeah, so that's what I wanted to say. That's all. You'll have to start the casting. मौलाना आजाद का रोल कौन करेगा? नहीं मिलेगा इतना अच्छा हीरो. There is nobody as good looking. I wanted to tell you, हाँ, कबीर को ही कास्ट कर देते. That's a good idea. Victor can direct it and Kabir can act in it. Family program तुम कर लो produce. चलो crowdfunding भी यहीं से कर लेते हैं. I wanted to tell you, जी 1 minute before I forget. The last speech of Maulana Azad is available online in his voice. So no, because you were saying that it should be put out and stuff. So I'm telling you, it's already there, and it's. Oh well, in this day and age, good luck. You wanted to say something? अच्छा, I want But to say he's- one thing, yeah. one thing, and which is कि आपने मुझे ये तो नहीं पता कि वो सूरह फातिहा पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, मगर ये मुझे पता है कि जब अंसार हारवानी साहब उनके मजाज के भाई थे, मजाज अपने मजाज शायर, उनके भाई अंसार हारवानी ने मुझसे कहा व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग हिम कि जब मौलाना आजाद बोलते थे तो जो रिपोर्टर्स थे वो यहाँ तक हाथ जोड़ते थे. आप धीरे बोलिए, वी कैन नॉट कीप अप विद यू, बिकॉज ना रिकॉर्डिंग थी ना कुछ था. सो उनकी जो फ्लो था वो अंसार हारवानी सेड के जी कोहनियों तक हाथ जोड़ते थे कि प्लीज आप थोड़ा आहिस्ता बोलिए, वी कैन नॉट कीप अप विद यू. सो दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ द मैन. बताएं, आप बताएं. यू नो, आपके हैदराबाद में तो आई थिंक यू हैव all the brains are here. I don't know. I would say जाकिर साहब अगर वो गवर्नर ना बन जाते ना, कई लोगों ने उनसे कहा कि आप ये बिहार के गवर्नर आप ये नहीं करिए. When he was जब जामिया मिलिया इस्लामिया उन्होंने एस्टेब्लिश किया था on 100% सेक्युलर, कोई सवाल ही नहीं था. जब एक बच्चे को लाए वहां से, जब 47 के फसाद हो रहे थे, एक हिंदू बच्चे को बचा के लाए, तो जब मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ते थे छोटे छोटे, तो हिंदू बच्चे के लिए थोड़ा सा एक मंदिर बनाते थे और उनसे कहते थे यू नो तुम प्रार्थना अपनी करो. मतलब इट वाज सो सेक्युलर. He could have become, but then he became, you know, governor and vice president and president. So I don't know. What do you say? Caliber का कौन है? बताओ. The next one we had Abul Kalam, APJ Kalam, okay, and he came up on the scene. But what happened? Many of the Muslims at that time scorned him, and I remember reading an article by Mr. Rafiq, the late Mr. Dr. Rafiq Zakaria, that saying that he cannot, by any yardstick, be considered a Muslim, okay, as a Muslim president, which was in fact criticized by a lot of Muslim intellectuals. Okay, so why is it? My question is that when the leader comes,
and like Abul Kalam Azad in his time, by many of the majority of the Muslims, they did not follow him. They followed him more after partition. But if it would have been pre-partition, such a thing wouldn't have happened. And the same thing has happened with APJ Kalam. And now, I remember it was during the CA movement when the Muslims started, taking his photographs, moving forward, and giving him the due recognition which should have been given to a Muslim leader. Maulana Azad जो थे, he was very critical of the Maulana, Mullah. Very, very critical. सरमद शहीद उन्होंने लिखा था 1910 में. It was about the Sufi saint. सरमद पे आर्टिकल मौलाना निजामुद्दीन के ख्वाजा हसन निजामी ने उनसे कहा था आप सरमद पे लिखिए. Then he wrote about same-sex love. At that time, 1910, between Sarmad and this boy called Abhechand, who was a सुनार का बेटा. ये भी एक चीज है, इस्तिलाह है poetry में. Can you believe the kind of vision he had? And उसके बाद उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की. But what I'm saying is that Mullah, he was very critical of the Mullah. Maulana Hali was very critical of the Maulanas, the Mullahs who never really adhered to the spirit of the Islam. वो कहते हैं मुल्ला की जो फतवा था, it is like the जिसको कहें फतवा दे दें, उसको का सर कलम कर दें. सरमद का सर कलम किया, मुल्ला कवि ने फतवा दिया क्योंकि औरंगजेब ने कहा फतवा दो, तो उन्होंने फतवा दे दिया. तो in people do not appreciate, in the contemporary context, people don't, उनके पीछे गोल पे गोल नहीं जाते. But later on, जब आप ये अल्फाज पढ़ें, और आप तो बहुत कुछ आपने पढ़ा है मौलाना आजाद के बारे में, then you see that he's a prophet of his times and he's a prophet of our times. That is why I feel that जो ना आपने कहा कि it should be, we should listen to his speeches. मैं तो बहुत थोड़ा कर सकी because of the time constraint, but we need it. The Hindus need it, the Muslims need it. That voice, that is a stellar voice for the world as it is today. Philistine, Lebanon, कहाँ हमारे the मजालिम जो ढाए जा रहे हैं, उसमें यही आवाजें हैं. And I think that we have to go back to that wisdom and bring it, in a kind of a universal sense. There was a mind-blowing book about the letters he has written. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि उनकी खैदोबंद की जो जिंदगी रही है, and he was in prison for quite some time, especially in the 1942 and 1946. So उनकी जो ख्यालात खैदोबंद में रहे हैं, वो कैसे एक independent India में reflect होते हैं. And he was also one of the first education minister of independent India. So now we have this new educational policy, NEP 2020 we call it. So the education policy that he has drafted back then, and he brought that national integration into it. So how is that national integration policy different from the new educational policy? If you can talk a little bit about his, the mission and purpose of national integration. Thank you. मैं आपका ये जो दूसरा your question is a very long one, and I'm not that, I don't think we can have a one-to-one. But I have to tell you that 17 letters he wrote from his prison. And he wrote them to his friend Habibur Rahman Khan Sherwani, and he was not planning to publish them. कोई सवाल नहीं था. अजमल खां जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने चुपके से उसको छाप दिया. And they are the most brilliant epistolary collection. I didn't have time to talk about them. They are very poetic. उसमें चिड़े चिड़िया की कहानी भी है. उसमें सारी मतलब एक जिंदगी का फलसफा भी है. उसमें उम्मे कुलसूम की आवाज जो उन्होंने सुनी अपने प्रिजन में, जो
इजिप्ट की बहुत मशहूर गायिका थी, उसका भी जिक्र है। उसमें उनका सितार बजाने का, ताजमहल के सामने जब वो सितार बजाते थे, उसका भी जिक्र है कि जब उनको लगता था कि ताजमहल की बुर्जियां जो थी वो नाचने लगी। आई मीन इट इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। बट मैंने तो उसके 2-3 लफ्जों का, 2-3 खतों का तर्जुमा किया है। बट इट दे आर रियली, आई मीन दैट इज समथिंग, अगर आपने पढ़ा है तो हैट्स ऑफ टू यू। But yeah, I think that needs to be, agar koi film bane, then that gubare khatir has to be up front. इतना अपनापन था, इतना खुलूस, इतनी जेन्युइनिटी थी कि मेरा ख्याल से अगर मौलाना आज़ाद की कोई अपनी बेटी भी होती तो वो इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से और इतने खुलूस से और इतने अपनेपन से उनका जिक्र नहीं करता। एक जुमला मुझे उसमें बहुत अहम लगा। जब मौलाना आज़ाद ने, एक तो मौलाना आज़ाद के साथ मुसलमानों ने जो सलूक किया उसका तो जिक्र आपने कर ही दिया है। मैंने कलम उठाया तो हाथ काट दिए, मैंने चलना चाहो तो पैर काट दिए, मैंने कुछ और करने में मेरी कमर तोड़ दी। वो बातें मुसलमानों ने सिर्फ मौलाना आज़ादी के साथ ये नहीं किया है, इससे भी ज्यादा मैंने उतना ही बुरा सलूक रफी अहमद भाई के साथ भी किया था। मुसलमान अपने दुश्मन को तलाश करते हैं अपना लीडर बनाने के लिए, ढूंढ लाते हैं कहीं से। जो सब अगर 4 बेईमान और बदमाश खड़े हों मुसलमानों का लीडर बनने के लिए, तो मुसलमान उन 4 में से सबसे बड़े बदमाश और सबसे बड़े हमारे भाई एक जुमला, मुस्लिम लीग के लिए अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। अगर मौलाना आज़ाद की इस बात पर अमल किया गया होता, इसकी तामील की गई होती, तो हिंदुस्तान की आज ये दुर्दशा नहीं होती। हमने मुस्लिम लीगियों को अपनी गोद में बिठाया, उनको अपना पॉलिटिकल एलाई बना दिया, उनको वजारतें दी, अपनी वजारतों। I think that was the beginning. पहला बिट्रेल इंडिया का तो एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, उसके लिए कहा जा सकता है कि मजबूर थे हम, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया था तो उसके बाद to give a quarter to Muslim fanaticism and communalism and bigotry and make them your allies and partners, I think was a bigger crime, biggest betrayal of India. अगर मुस्लिम लीग बैन हो गई होती, ये मुस्लिम कम्युनलिस्ट बैन हो गए होते, तो हमें मौका मिलता हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ खड़ा होने। लेकिन अगर हम मुस्लिम लीगियों को अपनी गोद में बिठाएंगे तो हम हिंदू महासभाइयों को या हिंदू फैनेटिक्स को या हिंदू कम्युनिस्ट को कैसे रोक सकते? आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम, बट थैंक यू वेरी मच। Rashid, that was Rashid Sherwani, Janab, my father's dear friend, and I can't speak. Shall I first do the needful? No, but then the dinner starts. So, on behalf of Lamakaan, may I request Humaira to felicitate first Anusha Khan. जो यहाँ बैठा उसको मिला. Please, loud applause. And now, Ilahi for Syeda Appa.
Thank you so much. Thank you so much. So, Anusha gave me this duty to deliver a vote of thanks and gave me just about 45 minutes to do that. So, first of all, thanks so much to Humaira, Ilahe, Kranti, and the Lamakaan group, Naeem, for hosting this so beautifully, second time in a row. So, thanks are due to you. The second round is to everybody who's gathered here. Auntie, Tangavelu Auntie, Salma Pa, Bawa Auntie, Sherwani Saab, and several of my friends for having gathered here today for this really phenomenal lecture. And then the thanks are due to this gentleman who I came across in the late 80s, who answered just about every question that we needed to find answers for, difficult questions. How do you explain India's federalism? What is Muslim identity in India? How do you explain Muslim representation? How do you talk about state reorganization in a new country that emerges, which is such a diverse country? And to this gentleman, several of us who wrote various kinds of exams that asked these tough questions, we owe a great deal. When I joined the civil services in 1993, there was this group of us who sat and thanked this one person for having given to us such beautiful solutions to the most toughest questions that we were preparing for. Rasheeduddin Khan, whose legacy for several, whose gratitude several generations owe him and his beautiful family. Thank you so much, Kabir and Anusha and Victor and Minnie, who's not here, for giving this to us, for giving this series of lectures to us. It is something that we desperately wanted, and I can't tell you how happy we are that you've given us this beautiful gift. The toughest one, and no thanks to Sherwani Saab for having already thanked Syeda Appa in such, with such articulation that I cannot repeat that. It was absolutely perfect, Sherwani Saab. So what I will do is I will thank Syeda Appa, who I have known for those 25 years that she talked about. I've seen her in the corridors of power in Planning Commission, met her several times, and I've been a fanboy all the time, including several visits to her house. But to thank her, I'm sorry, but I have to borrow Syeda Appa from a very, very dear and a very eminent poet. And he, I think, wrote for you and today's evening. So what he writes is, अब आप देखिए उनको, आप सब लोग, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोक जज्बे. And listen to this, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती, वो जब भी कॉलेज के सीढ़ियों से सहेलियों के साथ उतरती, तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो. Right? Keep looking at her. And then when she spoke, तो this Amjad Islam writes, कुछ इस तयख्कुन से बात करती, कुछ इस तयख्कुन से बात करती जैसे दुनिया उसी के कदमों से देखती. नहीं, sorry. I've never been so nervous in a vote of thanks. कुछ इस तयख्कुन से बात करती जैसे दुनिया उसी की नजरों से देखती हो. वो साहिलों के हवासी लड़की, look at her. वो साहिलों की हवासी लड़की जो बात करती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो. वो आज मिली तो उसी तरह थी, चमकती आंखों में शोक जज्बे, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट कि जैसे चांदी बरस रही हो. मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो. थैंक यू सो मच.